डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following which statement is correct regarding the promoter of eukaryotic chain. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यूकैरियोटिक चेन के प्रोमोटर के बारे में. इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑलवेज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड. ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टार्ट साइड जो प्रेजेंट है उसके अपस्ट्रीम हमेशा रहता है. इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज, समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इट इज. Okay, and different type of RNA polymerase have different type of locations, so it cannot be always located upstream of transcription start site. So this is the incorrect option. Next, it is located downstream of translation start site. No, it is not located in the downstream of the start site. It can be upstream as well as in downstream. Next, different promoter element are recognized by different RNA polymerases. Yes, different RNA polymerases, like there are three type of polymerases which are working, like polymerase 1, polymerase 2 and polymerases 3, which are working for this transcription. And this polymerases have the ability that recognizes different promoter elements. So the different promoter element is having different sites. Okay, so this is the correct option for this question. नेक्स्ट, प्रोमोटर आर रिकॉग्नाइज ड्यू टू द डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम कभी भी डिस्कस नहीं किए हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, दैट दे आर रिकॉग्नाइज ड्यू टू द प्रोमोटर्स आर रिकॉग्नाइज ड्यू टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us discuss the next question. In plants, if the sequence this is transcribed using opposite strand as template, the sequence of corresponding mRNA will be. ये पूछ रहा है कि mRNA का sequence क्या होगा, जबकि ये जो प्रेजेंट है, ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, इट इज नॉट वर्किंग एज अ टेम्पलेट. इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है, इट इज वर्किंग एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द mRNA. सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन what this sequence will be. अपोजिट स्ट्रैंड जो प्रेजेंट है एज अ टेम्पलेट विच इज वर्किंग, ये सीक्वेंस क्या होगा पहले हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे if this is 5 prime, then the opposite strand will be 3 prime. G will be complement with C, A with T, T with A, C, C, G, T, G, C, T. Next is A. It is 5 prime. Okay, in this sequence, this is working as a template. It is working as a template. So इसको देखकर सिंथेसिस होगा क्या हमारा mRNA. So mRNA क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 5 prime. C का कॉम्प्लीमेंट, C is G, T is A, A is U, C is G, G, C, A, C, G, A, U, 3 प्राइम. ठीक है, लेट अस से ये जो सीक्वेंस है कहाँ प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो 5 प्राइम, G A, G A, U G G, U G G, C A G, C A C, GAU 3 प्राइम. ये जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. which is correct for the termination of transcription in eukaryotes. Terminates prior to polyadenylation site, terminates during polyadenylation site, terminates after polyadenylation site, forms hairpin loop during termination. ये पूछ रहा है कि यूकैरियोट्स में क्या होगा. Like we know that in the eukaryotes there is a polyadenylation sites and the transcription is terminated prior to polyadenylation site. मतलब अगर polyadenylation poly A present है, multiple A present है, उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन का termination हो जाएगा. From here only there will be termination of the transcription. So the first option is the correct statement. Next, promoters for RNA polymerase 3 are located at -35 to -10 region. This is the correct statement. यहाँ पे एक डायग्राम था, like here we can see that यहाँ पे जो present है it is from -35 to -10 region. ये promoter का region है. Next question. Which eukaryotic RNA polymerase transcribes tRNA? Like RMT. ये जो present है, this will synthesize RNA polymerase 1, this will synthesize RNA polymerase 2, it is being synthesized by RNA polymerase 2, and this is being synthesized by RNA polymerase 3. So RNA polymerase 3 synthesizes the tRNA. Okay, this is RNA polymerase 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट दैट टीबीपी म्यूटेंट, टीबीपी मतलब क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, म्यूटेंट सेल एक्सट्रैक्ट्स आर डेफिशिएंट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। अगर टीबीपी का कुछ म्यूटेशन हो जाएगा देन दैट इज डेफिशिएंट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, वो जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कम होगा। ओके, फ्रॉम ऑल दिस प्रमोटर्स वाया क्लास 1, 2 एंड 3 फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीबीपी। ये जो फीचर्स कुछ जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, TBP is considered as universal basal transcription factor। हाँ, this is a true statement। TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट इज ए यूनिवर्सल बसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब कम से कम ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए भी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का जरूरत है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, TBP is not required for transcription of archaeal genes। नो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे ही हम देखे थे कि इट इज ए बसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब सब हमेशा ये ट्रांसक्रिप्शन टीबीपी प्रोटीन रिक्वायर है फॉर द हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टीबीपी इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग टाटा बॉक्स। यस, टीबीपी इज इन्वॉल्व एज इट इज अ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, दैट मीन्स इट विल बाइंड नियर द टाटा बॉक्स। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, TBP operates at all promoter regardless of the data content। ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे बोला गया है इट इन्वॉल्व्स इन रिकॉग्नाइजिंग टाटा बॉक्स, यहाँ पे बोल रहा है कि इट प्रमोट्स रिगार्डलेस ऑफ द टाटा कंटेंट। अगर ये इनका नाम है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, अगर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा टाटा कंटेंट को देन हाउ इट इज नेम्ड सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट विल रिकॉग्नाइज द टाटा बाइंडिंग site and it will bind, and this transcription factors which are present they will bind in this data binding part। Okay, now we will see which is the correct option। A और C जो present है they are the correct option but we have to find the incorrect option। so यहाँ पे A eliminate, यहाँ पे A eliminate, यहाँ पे C eliminate, so this C option is the correct statement। Next question, a non-enzymatic viral protein X, a non-enzymatic viral protein X present है was found to be inducing a cellular gene promoter activity। ये जो X present है ये क्या कर रहा है, it is inducing cellular gene promoter activity it is inducing। Although no in vitro DNA binding activity could be identified with X protein। ये बोल रहा है कि इन विट्रो डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, नो डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी वाज आइडेंटिफाइड। इट वाज फाउंड टू बी co-recruited in the cellular promoter along with a cellular transcription factor। ये बोल रहा है कि it was found to be co-recruited on the cellular promoter along with a cellular transcription factor। यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी बेस्ट इंटरप्टेड ऑफ द एबव फाइंडिंग्स। X इज ए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये यहाँ पे बोला था कि इट इज नॉट हैविंग ए डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। X फिजिकली इंटरेक्ट्स विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यस यहाँ पे ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही है आंसर। इट वॉज फाउंड टू बी co-recruited on the cellular promoter along with the cellular transcription factor, मतलब ये जो प्रोटीन X जो प्रेजेंट है it is binding with this transcription factor directly। okay, so this is the correct statement। okay, now the next question, in order to study the transcription factor TF2H it was cloned from a large number of human subjects। surprisingly the subjects having mutation in TF2H also showed defects in the DNA repair system। ये बोल रहा है कि जब कभी भी ये TF2H में म्यूटेशन किया गया during that time it was showing DNA defects in DNA repair system, that means this TF2H transcription factor 2H was responsible for DNA repair system। और एक फंक्शन क्या है TF2H का, it was working for promoter clearance, it was working as a kinase and it was phosphorylating the CTT domain due to which there was promoter clearance।
गिवन बिलो आर द एक्सप्लेनेशंस, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जिनमें से हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन। DNA damage is always associated with transcription inhibition. No, this is not. यहाँ पे दिया गया है always associated. So यहाँ से ही हम eliminate कर सकते हैं A ऑप्शन को। Next, TF2H has no role in DNA repair. यहाँ क्वेश्चन पे ही दिया गया था कि अगर इसका म्यूटेशन हो गया then there was a defect in DNA repair system. That means it is having a role in DNA repair system. So ये जो प्रेजेंट है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ए और बी दोनों ही गलत है। ए और बी, यहाँ पे ए और बी से ही हमें पता चल गया कि दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे इन द मैमरियन सिस्टम TF2H प्लेस ए एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड DNA रिपेयर प्रोसेस। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया गया था कि TF2H जो प्रेजेंट है, यहाँ से प्रूफ किया गया कि जब कभी भी म्यूटेशन हुआ TF2H में then there was a defect in DNA repair system. That means it is having a role in DNA repair system. So B option is the correct option. Now the next question. One of the cellular events that TOR, a kinase, positively regulates in the rate of RNA synthesis. TOR regulate the association of transcription factor to polymerase 1 subunit. When TOR is inhibited by the drug rapamycin, ये जो TOR जो present है, it is inhibited by rapamycin. The transcription factor dissociates from polymerase 1. Okay, ये क्या बोल रहा है? TOR जो present है, inhibited by, ये जो TOR it is inhibited by rapamycin. Okay, the transcription factor dissociates from polymerase 1. So during this time transcription factor जो present है, it dissociates from polymerase 1. Okay, next, a yeast strain is engineered. यहाँ पे एक yeast का strain को engineer किया गया, which express a fusion of transcription factor, जहाँ पे कि transcription factor और polymerase 1 subunit का fusion किया गया. The level of RNA synthesis is monitored in this cell using pulse labeled following rapamycin addition for the times indicated below. और यहाँ पे RNA का ट्रांसक्रिप्शन लेवल को रीड किया गया by using rapamycin. For the transcript profile of RNA observed for the wild type cell is given below. ये जो present है this is a wild type cell. और ये जो कंडीशन जो प्रेजेंट है इट इज ऑफ द इंजीनियर सेल। वाइल्ड टाइप सेल में क्या हुआ, यहाँ पे 0 पे देखो, या यहाँ पे थोड़ा थिक बैंड है, देन इट वाज लिटिल रिड्यूस, इन 40 इट इज अगेन रिड्यूस। ओके, ड्यूरिंग दिस वाइल्ड टाइप कंडीशन क्या हुआ, रापामाइसिन जो प्रेजेंट है इट वाज इनहिबिटिंग द टॉर एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड द polymerase 1 they were dissociating. Okay, during this time this was a scenario. We have to identify the pattern expected in the engineer strain. engineer strain में क्या होगा हमें देखना है। So यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे जो प्रेजेंट था ये rapamycin जब इनिबिट कर रहा था टॉर को, during this time the transcription factor and polymerase 1 was dissociated, but in the engineered cell this transcription factor and the polymerase are fused. So यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या, कुछ भी चेंज नहीं होगा। So this second is the correct option. ओके, यहाँ पे देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, नाउ which one of the following are not transcribed by RNA polymerase 2? RMT जो प्रेजेंट है, R is transcribed by RNA polymerase 1, M जो प्रेजेंट है it is by 2 and T जो प्रेजेंट है it is by 3. Not transcribed by RNA polymerase 2, that means D option is the correct option. ये जो tRNA जो present है it is being transcribed by RNA polymerase 3 and it is not transcribed by RNA polymerase 2. So option D is the correct statement. Now next, scientists usually find difficulty in identifying the exact transcription termination sites in eukaryotes because first option, immediately following termination of transcription, the 3' end is fully adenylated. No, it is not the correct option. Next, the 3' end is generated by cleavage prior to actual termination of transcription. हाँ, जो 3' end जो present है
it is generated by cleavage prior to actual टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. टर्मिनेशन साइट जो प्रेजेंट है उससे पहले ही क्लीवेज हो जा रहा है हमारा 3 प्राइम एंड में. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, इन यूकैरियोट्स precursors of microRNA, that is miRNA, and small interfering RNA siRNAs are usually synthesized by. ये जो siRNA और miRNA इसको कौन synthesize कर रहा है? These are being synthesized by RNA polymerase 2. So option D is the correct option. Next, a highly specific inhibitor that targets the phosphorylation activity of TF2H is added to an in vitro transcription reaction. Which one of the following steps is most likely to be affected? ये बोल रहा है कि TF2H जो प्रेजेंट है, हम डिस्कस किए थे कि ये जो TF2H जो प्रेजेंट है, इट इज also used during the DNA repair system as well as it is also having a kinase activity जो कि CTD डोमेन में फॉस्फोराइलेशन कर रहा था, जो कि हेल्प कर रहा था हमारा प्रोमोटर एस्केप के लिए. सो यहाँ पे कुछ म्यूटेशन किया गया है और समथिंग इज इनहिबिटिंग हियर ड्यू टू विच द फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ TF2H इज इनहिबिटेड. सो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेप में प्रॉब्लम आएगा और कौन सा स्टेप विल बी अफेक्टेड. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज टू प्रमोटर सीक्वेंस. अगर TF2H का काइनेज एक्टिविटी अगर म्यूटेशन हो जाएगा, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ दिस RNA polymerase to bind in the promoter sequence. So this is not the correct option. Next is the promoter clearance. Yes, promoter clearance will be affected when the transcription factor 2H is being mutated. The kinase activity is being mutated. Next, recruitment of TF2D. No, this is not the correct option. Open promoter complex formation. This is also the incorrect option. One of the following statement is generally true about RNA polymerase 2. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि RNA polymerase 2 के बारे में कौन सा statement correct है. It is decided to transcribing RNA for a single transcript unit, generally a large transcript which is then processed to yield 3 types of ribosomal RNA. No, this is not the correct statement. और यहाँ पे पूछा गया है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में ये कौन सा RNA polymerase 2 जो प्रेजेंट है वो कौन सा RNA प्रोड्यूस कर सकता है. लाइक वी नो दैट RMT rRNA is synthesized by RNA polymerase 1, M is synthesized by RNA polymerase 2 and T is synthesized by RNA polymerase C. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे M जो प्रेजेंट है इट इज बाय RNA polymerase 2 और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जो प्रेजेंट है ये दिया गया है कि इट जनरली सिंथेसाइजेस वेरियस टाइप्स ऑफ mRNAs एंड स्मॉल नॉन कोडिंग RNAs. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. डी ऑप्शन देखो, इट इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ rRNA. फॉर द सिंथेसिस ऑफ rRNA, RNA polymerase 1 is involved, and for the synthesis of tRNA, RNA polymerase 3 is involved. So this is the incorrect option. Okay, next question. Which one of the following statement related to the transcription and processing of mRNA is incorrect? यहाँ पे 4 statement दिए गए हैं जो कि है regarding the transcription as well as processing of mRNA. Let's discuss the first option. During prokaryotic transcription, DNA binding properties of RNA polymerase are altered by sigma factor. Yes, जब कभी भी sigma factor attach होगा हमारा RNA polymerase का core enzyme से, then it has the ability that it will bind near the promoter region. So this is the correct statement. Next, in eukaryotic transcription, synthesis of rRNA, mRNA and small rRNA occurs by RNA polymerase 1, 2 and 3. Yes, RNA polymerase 1 जो present है it is synthesizing rRNA. RNA polymerase 2 जो present है it will synthesize mRNA and RNA polymerase 3 जो present है वो small rRNA को भी synthesis कर सकता है along with tRNA. Okay, so this is the correct option. Next, the splicing observed in tRNA involves successive sequential cleavage and ligation reaction, while pre-mRNA splicing process through lariat formation. Yes, जो tRNA का जो splicing होता है it is by the process of cleavage as well as ligation, जो कि हम
हम इस चैनल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्प्लाइसिंग ऑफ टीआरएनए बारे में और वी कैन टेल दैट टीआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में. इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो यू कैन सी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस टीआरएनए का जो प्रोसेस, जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस रहता है, इट इज बाय द cleavage as well as ligation, whereas in case of mRNA there will be lariat formation. So this is the correct statement. Next, mRNA with premature stop codons are degraded by nonsense mediated decay, and mRNA without an in-frame stop codon gets accumulated and translated into the cytoplasm. So this is not the correct option. So already we have discussed these three, why they are the correct option. So here this is about the nonsense mediated decay, which I will give you in the next lecture. Statements were made with respect to transcription in eukaryotes. यहाँ पे कुछ statements दिए गए हैं जो कि है eukaryotic के transcription के बारे में. So let's discuss about the first statement. RNA polymerase 3 synthesizes mRNA in the nucleoplasm. ये जो सिंथेसिस, mRNA का जो सिंथेसिस, इट मे बी RNA polymerase 1, 2, 3, इट इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस, नॉट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो जैसे कि ये इनकरेक्ट हो गया, सो वी कैन एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन एज वेल एज द फोर्थ ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, the target promoter for RNA polymerase 3 is usually represented by a bipartite sequence downstream of the transcription start site. Yes, this is a correct statements. Like we can see here that this RNA polymerase 3 which is present, it may be a bipartite sequence and it is consisting of bipartite sequence downstream of the start site, and this is having three types like type 1, type 2 and type 3. In the type 1 it is box A and box C which is present. In type 2 it is box A and box B which is present, and in the type 3 there are other transcription, other factors like Tata box, PSA sequences are some of the difference of this RNA polymerase 3. They are of three types. Okay, and they may be of bipartite sequence. So this B option is the correct option. Now let's discuss about the C option. The assembly factor TF3A and TF3C assist the binding of positioning factor TF3B at the precise location. Okay, yes, this is a correct statement. These are some of the transcription factors which are working and they help in the recruitment of this transcription factor TF2B. Next, TF3B is the last factor that joins the initiation complex. No, this is not the last factor. Like we can see here that there are near the Tata box there are some other transcription factors which comes and bind along with this TBP. The first is a TF2D, then it recruits TF2A and TF2B, and after the recruitment of this TF2A and 2B, then there is requirement of TF2F, by which the RNA polymerase is coming and binding. Then there is requirement of TF2E which recruits the TF2H for promoter clearance. So the last factor is TF2H, not the TF2B. Okay, so this is not the correct statement. So we can eliminate this. By eliminating this D option, we are getting our answer, that is a B statement is the correct option. Okay, now let's discuss about the E. Phosphorylated serine residue in the C-terminal domain of CTD of RNA polymerase 2 serves as a binding site of mRNA processing enzyme. Yes, the CTD domain which is present, it is working as a mRNA processing enzyme. How this is working as a mRNA processing enzyme? Because there are certain positions of this CTD domain, and in the CTD domain there is phosphorylation at specific sites, and each specific site phosphorylation has specific functions. Like if there is phosphorylation of serine 5 in the CTD domain, then there is promoter escape as well as capping. So this is about the mRNA processing. Okay, next, if the phosphorylation is in serine 2, then there is elongation as well as splicing. Okay, these are certain things which are being done in the CTD domain of RNA polymerase. So this E option is the correct option for this. Okay, so here we have got the right option, that is option number B is the correct statement for